सो हे गाइस, वी बैक इन द टाउन अगेन। सो आज मुझे मेरे रिसर्च के दौरान पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में कुछ पढ़ने का मौका मिला। सो आई थॉट आई वुड टेक यू to the fundamentals of partition coefficient of a mineral, of a element, in particular mineral phases. So it depends upon the phases of mineral and various factors. So मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बता दूं उसके बारे में. So let me break down to you. So partition coefficient is a numerical value which is a particular value for a particular element in a particular mineral phases. For example, it is calculated as the concentration of the element in mineral and divided by the concentration of that element in the melt of that mineral. So if it is greater than 1, then the element is said to be compatible with that mineral, and if it is lower than 1, the partition coefficient value is lower than 1, then it is said to be incompatible in that mineral, because कि अगर वो उसका वैल्यू 1 से ऊपर होगा, so the numerator will be higher. That means the same element prefers to be in the mineral phase or in the solid phases of that mineral, and when it melted, the concentration of that elements choose to stay in the solid phase only. Some of them get out from the solid phase to the melt, and if the value, the partition coefficient, which is assigned as kd or only d value, kd is the bulk coefficient, bulk partition coefficient, and kd is for a particular mineral. Somewhere it is written as k or d also, depends upon the books, the author you are referring. So हम इसको एक स्टोरी की तरह भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस स्टोरी में गार्नेट विलन है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर द हीरो एंड हीरोइन. तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में द फर्स्ट रेयर अर्थ एलिमेंट according to periodic table is lanthanum. The lanthanides are the rare earth elements, by the way. Lanthanum and lutetium is the last rare earth element, but lutetium is a odd atomic number, so it is slightly less abundant than the immediate neighbor ytterbium. So we will take ytterbium as the smallest rare earth element because of the lanthanide contraction in the periodic table. When you go from left to right, the size of the atoms decreases gradually. So ytterbium is the smallest. Of course, lutetium is the smallest, but the abundance of ytterbium is more than lutetium. So we will take ytterbium as a reference point for now. So if you get concentrations of lanthanum and ytterbium, we found that garnet has a preference towards heavy rare earth elements, which are the smallest rare earth elements, because of the atomic size of crystal lattices of garnet, which because कि उनका साइज ऐसा है कि वो बस वो उतने छोटे छोटे एटम्स को ही अपने अंदर फिट कर सकता है, जो कि है ytterbium के साइज. ytterbium के साथ साथ और भी कंपैटिबल है हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स विच आर इन गार्नेट, बट हम ytterbium को लेंगे सबसे छोटा, इसीलिए सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट लैंथनम, विच इज जो साइज का बड़े होने की वजह से वो गार्नेट के क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं हो सकता, तो इट इज इनकम्पैटिबल. बट व्हेन द गार्नेट मेल्ट्स, तो लैंथनम को जगह मिल जाता है वो मेल्ट में जाने का, क्योंकि जब एक मिनरल मेल्ट होता है तो फिर वो एक्सपैंड होते हैं तो फिर वो चले जाते हैं. लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं अभी, तो वो लैटिसेस से बहुत छोटे हो जाते हैं, तो फिर वो भी एंटर नहीं कर पाते वो मेल्ट फेज में, समझ रहे हो. तो फिर वो चाहता है कि कहीं पे गार्नेट जो मेल्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम मैंटल में देखेंगे तो एवरीथिंग इज गेटिंग पार्शियली मेल्टेड, नॉट कंप्लीट मेल्टेड. अगर कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा तो फिर पूरा मैंटल ही मेल्ट हो जाएगा, तो फिर वो एक नया चैप्टर खुल जाएगा अर्थ डायनेमिक्स का. फिर पीएचडी इंटरव्यू में ज़्यादा आसानी हो जाएगी सबको. ओके, लीव इट. सो दिस इज द
फंडामेंटल्स कि कैसे क्या होता है, क्यों एक मिनरल फेज के लिए एक एलिमेंट ज़्यादा प्रेफरेंशियल होता है और एक नहीं होता है। सो कीपिंग दैट माइंड।